why do we need elections? Elections take place regularly in any democracy. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. But why do we need elections? Let us try to imagine a democracy without elections. A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions, but as we have already seen in chapter first, this is not possible in any large community, nor is it possible for everyone to have the time and the knowledge to take a decision on all matters. Therefore is most democracies people rule through their representatives. Is there a democratic way of selecting representatives without elections? Let us think of a place elections. Let us think of a place where representatives are selected or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There could be some difficulty in deciding on who is more experience or knowledge. Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledge, but let say the pupil can resolve these difficulties clearly. Such a place does not require elections. But can we call this a place or democracy? How do we find out if the people like their representatives or not? How do we ensure that these representatives rule as per wishes of the people? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wishes to do so. This mechanism is called elections. Therefore, elections are considered essential in our times for country representative democracy. In an elections, the voters make a many choice. They can choose who will make laws for them. They can choose who will form the government and take major decisions. They can choose the party whose politics will guide the government and law making. चुनाव की जरूरत क्यों है? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वह भी वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की वो चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्रों की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है।
लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। न हो यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। यह ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे जो कि प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो, वे अपने पद पर ना बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानून को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी को चुनाव कर सकते हैं। What makes an election democratic? Elections can be held in many ways. All democratic countries hold elections, but most non-democratic countries also hold some kind of elections. How do we distinguish democratic elections from any other election? We have discussed this the question briefly in chapter first. We discussed many examples of countries where the elections are held but they cannot really be called democratic elections. Let us recall what we learned there and start with a simple list of the minimum conditions of a democratic election. First, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. Second, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. Third, the choice should be offered at a regular intervals. Elections must be held regularly after few years. Fourth, the candidate preferred by the people should get elected. Fifth, elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose at they really wish. These conditions to the elections held in our country to see if we can call this democratic elections. Is it good to have political competition? Elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties at the constituency level. It takes the form of competition
among several candidates. If there is no competition, elections will become pointless. But it is good to have political competition and many damage. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. You would have heard of people complaining of uh, party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win election. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not like the idea for being dragged into unhealthy competition. Our constitution to makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in elections as the way to select our elections, as the way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know that is good for the people are motivated only by a desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Politics leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political career. They want to remain in power or get power and position for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. How do we deal with his life real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other more realistic way is to set up a system where political leaders they are rewarded for serving the people and punished for not doing so. Who decide this reward or punishment? This simple answer is the pupil. This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chance to victory will increase in the next elections. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to again. So, if a political party is motivated only by desire to uh, be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested on in his profit, he is forced to give a good service to the customers. If he does not, the customers will go to some other shop. Similarly, political competition may cause division and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people.
चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्यों हैं? चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं। यहाँ तक कि अधिकांश और लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। तो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं। इसे जांचने के लिए हमें इसे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्के से चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहां सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का सम्मान मूल्य हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियों और जिम्मेदारों का चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों का भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्र में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है? चुनाव प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इसे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। अब आपने भी अपने इलाकों में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों का लोग और नेता अक्सर एक दूसरे से के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियों और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म के दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले नहीं उतरते। इन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि हित किन चीज़ों में है तथा यह सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा में ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं।